calling it a matter of national honor. The Congress has demanded that the Prime Minister break his silence with sharp attacks, calling him a weak Prime Minister who is afraid of Trump. The party has accused the Prime Minister of compromising the country's foreign policy and honor. Shiv Sena UBT called the claims delusional and said that they must be publicly debunked, while the Trinamool Congress slammed the government, saying Modi's Swadeshi Jumla has been exposed and that India's foreign policy has become a joke. प्रधानमंत्री तो तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं, ट्वीट करते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं, और यहां से तारीफ, वहां से टैरिफ। कंप्लीट सरेंडर क्यों है मोदी जी का? सीज फायर होगा तो ट्रंप घोषणा करेंगे। आज तक मोदी जी ने खुद खंडन नहीं किया कि ट्रंप ने जो बयान दिया है वो गलत। कौन होता है अमेरिका हमको निर्देशन देने वाला? भारत तो नहीं स्वीकार करे। मोदी जी की ऐसी कौन सी कमजोर नस है जो उसने दबा रखी? रशिया हमारा पारंपरिक मित्र है और पुराना मित्र है। अमेरिका भरोसेमंद दोस्त नहीं है, और अमेरिका की इस प्रकार की भाषा कमजोर नेतृत्व को दिखा रही है। मजबूती के साथ प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। सशक्त नेतृत्व तभी दिखाई देगा जब विश्व के अंदर हम लोग अपनी पहचान अपने आप रखने का काम करेंगे। दूसरा व्यक्ति हमें कोई गाइड नहीं कर सकता कि वो हमें बताएगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अभी तो हमारी विदेश नीति तो कोई नीति है ही नहीं। ये तो फुटबॉल है। जिस तरह से फुटबॉल को किक किया जाता है उधर ही चला जाता है। जब चाइना पीटता है तो अमेरिका में जाते हैं, अमेरिका पीटता है तो चाइना की तरफ जाते हैं। जब दोनों पीटने लगते तो रसिया की तरफ जाते हैं, रसिया फिर पाकिस्तान की भी तरफ खड़ा हो जाता है। हमारी कोई विदेश नीति है क्या? ट्रंप का प्रेशर हमेशा काम करता है मोदी जी के ऊपर। ऐसा लगता है कि मोदी जी उनके पास नौकरी कर रहे हैं, ट्रंप के प्रेशर पे मोदी जी काम कर रहे हैं। इसीलिए तो ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। आप रशिया तो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है, मित्र रहा है देश का। हम रशिया के साथ इस प्रकार से बर्ताव करेंगे तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। All right, so those have been the statements coming in from the opposition. Remember, even as Donald Trump made this claim, the External Affairs Ministry of India has put out a response saying that India's energy needs and energy purchases are dominated and influenced by our own domestic requirements, and national policy, national energy security comes first and foremost. Everything else comes later. My colleague Rishabh is joining me for more on this. Rishabh, even as domestically there is a war of words going on, the MEA has put out a statement very clearly, sharply, without mentioning what Donald Trump has said. They have put out a message to him that, look, our energy needs are dominated by our national energy policy as well as needs, as well as the fact that the U.S. itself has been interested in deepening energy cooperation with us, and that talk is underway between both the countries. Well, sure, definitely. If we go by the statement of External Affairs Ministry, India has clarified here that our energy requirements are driven by our national interests, and no third party can influence that. Very categorically, External Affairs Ministry said that, ours is a nation-first approach, and whatever is good for India's national interests, we will do that. This is, in a way, is seen as India do talk about diversification of oil import or energy purchase, but nowhere says that we will halt Russian oil chain. All right, Rishabh, let me try and reconnect with you. Viewers, of course, Rishabh was telling us more about India's response that has been given now to the United States of America after their president made this significant claim that Prime Minister Modi has told Trump himself that we will be stopping the purchase of Russian oil. That clearly has not happened.